अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम मौजूद हूँ 120 स्क्वायर यार्ड के प्रोजेक्ट पे, जहाँ पर हमने ये ऑटोमेटिक वाटर क्लीनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। अक्सर लोग सोलर पैनल तो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इसकी सफाई करना बड़ी मुश्किल होती है। या तो आपके घर पे जो कि कंटिन्यू डेली बेसिस पे या वीक में ट्वाइस मरतबा इसको साफ़ करे, या बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार बंदा हो जो कि इसको साफ़ कर सके। आप देख सकते हैं अभी हमने पंप को स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नोजल स्प्रे इसके काम कर रहे हैं। आपको सफाई करने के लिए या तो थर्ड पार्टी कंपनी जो कि क्लीनिंग कंपनी होती है उनकी सर्विस हायर करनी पड़ेगी। उनके साथ मसला ये आता है कि उनका पास टाइम अवेलेबल नहीं होता। वो आपका एक शेड्यूल दे देंगे, आप उस शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर आकर वो साफ करते हैं। या सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है जनाब, आप इंस्टॉल करवा लें। ऑटोमेटिक वाटर क्लीनिंग सिस्टम है जो कि हमने इस प्रोजेक्ट पर इंस्टॉल किया है। कंप्लीट डिटेल और गाइडलाइन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें 3 चीज़ आपको चाहिए। पीवीसी का आधे इंच का पाइप चाहिए, नोजल स्प्रे चाहिए, यूनियन चाहिए, क्योंकि हम लोग डिसमेंटल करेंगे। अगर इन केस आपकी कोई भी प्लेट ख़राब हो जाती है, इसको डिसमेंटल करने के लिए आपको यूनियन की रिक्वायरमेंट होगी। आप देखिए हर जॉइंट हर जगह पर यूनियन हमने लगाई है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए पंप। हमने 1.5 हॉर्स पावर का पंप से कनेक्ट किया है और पानी की सप्लाई के लिए हमने जनाब ये टावर टंकी का इस्तेमाल किया है। 5 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम। अभी तकरीबन वीडियो बनाते हैं 3 मिनट 5 मुझे, और 3 मिनट में ये पूरे आपके सोलर प्लेट्स को निथाड़ देगा। असल में अरे ये ऊपर से आ जाएगा ऐसे करके। आगे पीछे करके सामने और है ना
सारी क्लिप ना एक ही साइड पे गाइड कर लेते हैं, दरवाजे करके ना पहले पाइप भी आगे